morning. Morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Okay, let's come to action by target today. And what is the effect of that on our plot? Okay, let's start with action by target and predicting the action to take. So let's take a question. So let's take a question. Okay, so ownership scores, that is WO, is 0.55, true. 15 knots. Target bears as follows: 936, 105 degrees true, 11.5 miles, and 942, 104.5 degrees true, 8.9 miles. Now write down the question. Master of ownership decides to increase the nearest
CPA to 1.5 miles. So the new CPA is 1.5 miles. By altering course to port, by altering course to port at 0945 hours. Find the action necessary and the new CPA time. Find the action necessary that is the alteration necessary and the new CPA time. So, and the new TCPA. All right. What scale would you like to use? Number three. Number three. Number three. So start with number three. Put the first position, 105 degrees true. And complete the triangle.
Since alteration is at 9:45, predict position P for 9:45 at the rate of OA. Predict position P at 9:45 at the rate of OA. Since the CPA has to be increased to 1.5, so draw a goal chakkar from Charlie at a distance of 1.5. Radius is 1.5. Draw a goal chakkar. So this is a circle of 1.5 miles. Since we want a CPA of 1.5 from 9:45, so draw a tangent from P to the 1.5 mile circle. Where the point cuts the circle, call that point as N. Then Pn is the relative line of approach of the target post 9:45. Put the roller ruler at Pn and transfer it backward through A. सर वो पॉइंट पी का एक बार बता देंगे सर, वो टेबल से ही निकालना है ना? OA के रेट पे निकालना है. अगर OA डिस्टेंस टारगेट 6 मिनट में इतना करता है तो 3 मिनट में कितना करेगा? ओके सर. सर ये जो एन पे टेंजेंट लिया, ये सी के बॉटम में नहीं आ सकता सर? सी के बॉटम में नहीं. जब आप पोर्ट को ऑल्टर करोगे ओनशिप, WO will go to WO dash. तो the CPA has to be increased to 1.5 mile on the same side. पहले CPA इतना माइल था, अब 1.5 माइल करना है. ओके सर. So सर ये पीएन ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था ट्रांसफर करने के लिए? PN ज्वाइन करने के बाद put the roller ruler at PN and transfer it backward through A. ओके सर, ओके. Transfer it backward through A. So these two red lines are parallel.
These two red lines are parallel. So always remember, backward transfers take place through A. Backward transfers take place through A. Now, ownership has to alter course to port. That means WO has to become WO dash or WO1. So with center at W, radius as WO, put your compass on WO, center at W, cut an arc onto the port side. Cut an arc onto the port side. This will be O1. सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ सर, ये समझ में नहीं आया था। Center at W, radius as WO. I am altering course to port. Speed is the same. So cut an arc onto the left side, onto the port side, जहां पे ये रेड लाइन को काटेगा. ओके सर। Join WO1. सर ये नेसेसरी इस ट्रायंगल के अंदर अंदर ही कट करेगा? ये नेसेसरी है कि ट्रायंगल के अंदर ही कट करेगा. डिपेंड करता है, शायद ना भी काटे, बट काटना तो चाहिए पोर्ट साइड पे, बट नॉट नेसेसरी. Join WO dash या O1. So now you have two triangles, WOA, duration 6 minutes, and WO1A, again duration is 6 minutes. So the new course, alteration to port, is WO1 and measure WO1. That means put your roller ruler at WO1 and transfer it through Charlie and read the new course. 333. करेक्ट, 332 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. So the new course is 332 or 333, whichever you're getting. That's fine. Somebody might get 330, somebody might get 335. All that is okay. So if I alter course to port, then basically the target will have a CPA of 1.5 miles. Now calculate the new TCPA.
is the last reported position or predicted position, which is 945, plus distance to go, Pn, upon parallel line, O1A, into common interval, 6 minutes. हाँ जी, any doubts? The 10:55. ठीक है, whatever you're getting. सर ये एक बार ब्रीफली सर ये एक बार फिर से बता दो कौन सा वाला? कि ये जो आपने सीपीए का जो सर्कल लिए सीपीए का सर्कल 1.5 माइल्स का मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। सीपीए 1.5 माइल चाहिए, तो 1.5 माइल का सर्कल ड्रॉ किया, पी से टेंजेंट ड्रॉ करी उसकी, बिकॉज आई वांट द रिलेटिव लाइन ऑफ अप्रोच टू बिकम पीएन। So originally I was heading 055. That is how original. Please mute yourself. Please mute yourself. Yeah. So I'm heading 055. The target is at alpha, coming like this. So at 9:45, when the target was here, I decided to alter course to port because the question says so. And I want a CPA of 1.5 miles. So I'm altering to 332. And now the target will pass like this at a distance of 1.5 miles. This is how the situation is going to emerge. ओके सर गॉट इट थैंक यू सर सीपीए सर्कल के नीचे से भी बना सकते हैं सर, वही जानना था, ये ऊपर से क्यों हम कर रहे हैं पोर्ट के लिए? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है that he wants to, the original CPA was so much, he wants to increase the CPA to 1.5 miles. Original CPA was जितना भी है 0.2 miles, 0.5 miles, whatever. Question में लिखा है he wants to increase the CPA to 1.5 miles by alteration of course to port. तो जब जहाज ऑल्टर करेगा पोर्ट की तरफ, तो लाइन ऑफ अप्रोच तो उसी साइड आएगी ना, उसके स्टाबर्ड पे आएगी। अगर जहाज स्टाबर्ड जाएगा तो लाइन ऑफ अप्रोच नीचे जाएगी। जी सर। सर एक बार O1W कैसे प्लॉट किया बता सकते हैं? O1, सो W से मैंने सर्कल लिया,
with W as center, O as the radius कंपास में, और फिर उसको ऐसे पोर्ट साइड लेता गया जहां पे उसने इस लाइन को काटा, उस पॉइंट को मैंने O1 का नाम दे दिया और फिर W और O1 को ज्वाइन कर दिया। ओके सर। सर वन मोर थिंग सर, कल आपने बोला था न्यूमरेटर मस्ट बी पैरेलल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपने बोला था ना पैरेलल लाइंस और आर्क सेम लाइन। करेक्ट। तो सर अब ये सेम लाइन कैसे बन रही है पीएन और ओ डैश है? ये इसमें सेम नहीं है ना, ऑल्ट्रेशन है। ऑल्ट्रेशन में तो पैरेलल होगी, तो पीएन इज पैरेलल टू O1A। ओके, इसका मतलब अगर ऑल्ट्रेशन होगी तो सेम लाइन नहीं होगी, तो पैरेलल होगी। दैट्स राइट। ओके अगर ऑल्ट्रेशन होगी तो पैरेलल होगी, और अगर ऑल्ट्रेशन नहीं होगी तो सेम लाइन है। ओके। सर आंसर में काफी डिफरेंस आ रहा है, 1048 आ रहा है मेरा। ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। सर हम्म। सर अगर इस क्वेश्चन में ऑल्टर कोर्स पे स्टारबोर्ड होता तो फिर कैसे होता? अभी मैं उस पे आ रहा हूँ, पहले ये कर लेता हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। सर ये कॉमन इंटरवल हमेशा क्वेश्चन में दिया वही रहेगा? जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही रहेगा, कॉमन इंटरवल। जो भी प्लॉटिंग करी, जो भी दिया हुआ है, 6 मिनट का इंटरवल है तो 6 मिनट, 12 मिनट का इंटरवल है तो 12 मिनट। ओके। Okay, now I'm coming to the variations in this question. So supposing the question had said पोर्ट ने बोला होता एंड क्वेश्चन में बोला होता CPA of 1.5 miles, no alteration of course, only reduction of speed. No alteration of course, only reduction of speed. Reduction of speed only. तो कैसे करते? तो सेम चीज, ये टेंजेंट पीछे गई, जहां पे इसने मेरे ओरिजिनल कोर्स लाइन पे काटा उसको मैंने नाम दे दिया O2। Then WO2 is my new speed. WO2 is my new speed for 6 minutes. So WO2 को मेजर करो, कितना डिस्टेंस आता है, 6 मिनट में है तो 60 मिनट में कितना होगा WO2. So it is at the rate of WO2. Is this okay? सर फिर से बता दीजिए। You can repeat once. Now I am saying, अब मैंने वेरिएशन कॉज करी है क्वेश्चन में कि नो ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स, ओनली रिडक्शन ऑफ स्पीड। तो अगर खाली रिडक्शन ऑफ स्पीड होगी, नो ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स एंड CPA चाहिए 1.5 माइल, तो कैसे करोगे क्वेश्चन को? सेम वही PN को पीछे ट्रांसफर किया, जहां पे उसने WO लाइन को काटा, बिकॉज कोर्स की ऑल्ट्रेशन नहीं हो रही तो WO रहेगा कोर्स, स्पीड रिडक्शन करनी है खाली। तो जिस पॉइंट पे काटा उसको O2 का नाम दे दिया, WO2 will be the reduced speed. So measure WO2, कितना डिस्टेंस आता है? सर 9 आ रहा है सर। आ रहा है स्पीड 10 नॉट सर। नहीं, मेरी स्पीड 9 आ रही है सर। अच्छा 9। बेसिकली टेल मी द डिस्टेंस कितना आ रहा है? सर 1 माइल। 1 माइल, ओके, 0.9। 1 माइल। So 1 mile is for 6 minutes, therefore for 60 minutes.
So 9 knots, 9.5 knots, 10 knots, whatever you're getting. That means if I reduce my speed by 6 knots, I will achieve a CPA of 1.5 miles. So reduction of speed is all right with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया सर हमने टू द सर्कल ऑफ 1.5 माइल्स, इसको सर हम बिलो सी भी कर सकते हैं या सिर्फ वी हैव टू कीप इट ऑन द टॉप ऑफ सी? ये जो टेंजेंट था सर इनिशियल फ्रॉम पी टू एन। भाई देखो, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, टारगेट ऐसे जा रहा है, मैं अपनी स्पीड को रिड्यूस करता हूँ, तो टारगेट कहाँ पे पास करेगा? मेरे आगे से पास करेगा, पीछे से पास करेगा? आगे आगे से। तो इसीलिए तो टेंजेंट तो आगे ही बनेगी ना। मैं स्पीड को रिड्यूस कर रहा हूँ अपनी, मैं रिटार्ड कर रहा हूँ। अगर मैं रिटार्ड कर रहा हूँ तो टारगेट तो मेरे आगे से ही जाएगा ना। पोर्ट ऑल्टर करेंगे तब भी तो पीछे से जाना चाहिए ना सर? अगर तो वही तो कर रहा था। ऑल्टरेशन तो पोर्ट जब मैंने ऑल्टर किया तो मैंने ऐसे ऑल्टर किया, आगे से ही जाएगा। तो कहाँ से जाएगा? मेरे स्टार्बोर्ड साइड से जाएगा ना। यस सर। तो वही तभी, इसलिए वही था थी। ठीक है, इज दैट ओके? ओके सर। Is point number 2, reduction of speed, all right with everybody? Yes, sir. Yes. Okay. Now I'm coming to the third option. Alteration of course to starboard. How much should I alter course to starboard so that I have a CPA of 1.5 miles? So therefore, same funda, WO is radius, speed is the same, original speed, 15 knot की, only alteration of course. So WO is radius, this time I'll cut my arc on the starboard side. So cut the arc on starboard side, call it as O3. Call it as O3. Join WO3. Then the new course is WO3 to starboard. Measure WO3. Zero 7 9. 0, 7, 9. That is, मेरा original course 055 था. So that is 24 degrees starboard. Alter course by 24 degrees to starboard. इसमें था ऑल्ट्रेशन ऑफ द पोर्ट में था 28 प्लस 55, 28 प्लस 55, 83 degrees to port. 83 degrees to port.
तो सर अभी जब TCPA निकालेंगे स्टारबोर्ड ऑल्टरेशन का, तो इट विल बी 0945 प्लस PN अपॉन O3A. 3A into 6 minutes. O3A into 6 minutes. ओके सर। रिडक्शन ऑफ स्पीड वाले का डिनोमिनेटर में O2A. ओके O2A। ओके सर। तो सर अगर हम स्टारबोर्ड ऑल्टर कर रहे हैं तो फिर तो ये पैरेलल लाइन भी नहीं हुई, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हुई। O3A। ओके सर, O3A पैरेलल मैं ही है। उसी लाइन पे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तीनों O1, O2, O3 आर लाइंग ऑन द सेम एक्सटेंडेड लाइन. ओके सर। They're all parallel to PN. यस सर। सर TCP के लिए O3A हो जाएगा ना इसमें? O3A TCPA के लिए डिनोमिनेटर में O3A. ओके सर, इंटरवल भी 6 मिनट्स रिडक्शन ऑफ स्पीड के लिए डिनोमिनेटर में O2A और ये 6 मिनट्स ही रहेगा. ओके सर। So ये 3 ऑल्टरेशन समझ आ गई हैं सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर वन क्वेश्चन सर। हाँ जी पूछिए सर, इज देयर नो सिनेरियो इन व्हिच n विल बी टेकन बिलो c, पॉइंट n? n will be taken below c. अभी आएगा, आगे जाके आएगा. इस केस में तो नहीं है. अच्छा ठीक है सर। इस केस में नहीं है और बाकी केसेस में आएगा. जी सर। सर कोई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें इंटरवल लाइक एक का 0936 to 0942, उसके बाद में इंटरवल 6 मिनट्स के बाद में 12 मिनट्स हो जाए, या इंटरवल ऑलवेज रिमेन्स द सेम? नहीं, प्लॉटिंग इंटरवल हैज टू बी कॉमन, इक्वल, ओके कॉमन सर। इक्वल इंटरवल ना. ओके सर स्पीड इंक्रीज करके कोई सिनेरियो नहीं आता है सर? स्पीड इंक्रीज करके कोई सिनेरियो नहीं आता, because you're already at safe speed as per ROR. So increasing of speed is not an option to avoid collision. Okay sir. Okay. Now the next part of the question, जो कि काफी popular है, this thing. Question बोलता है, out of these 3 alterations, which alteration would you prefer and why? Which alteration would you prefer and why? Maninder Singh, could you just unshare the screen, please? Mahinder Singh, please unshare your screen. Okay. Starboard, alter to starboard should be good, sir. It will be the fastest, I mean, soonest. So basically, Plus, she's on our starboard side also. we are talking about ROR now. We are going like this. We have a vessel which is crossing us from starboard to port, open sea. The ROR says we should alter course to starboard and pass well clear of the vessel and will not cross ahead of the other vessel. So therefore,
Alteration of course is the alteration of course to starboard is the preferred choice. So your answer will be alteration of course to starboard is the preferred choice. Now, why? Because it's more practical. It's more practical. It'll be more prudent because I will have my starboard side clear at all times for any future situation. I will be passing the stern of the target and I'll have to make a lesser alteration to starboard. I'll have to make a lesser alteration to starboard. So therefore, I will alter course to starboard as a preferred choice. Now, the next question, which is very popularly asked. Between alteration of course and reduction of speed, which one would you prefer and why? Sir, alteration of course. Alteration of course, ROR, rule number 8. Okay, so It is visually apparent also earlier, very easily. so therefore, alteration of course is preferred over reduction of speed. Why? Because readily visible or apparent. It is instantaneous. More practical. ROR says so. That is in rule number 8 and rule number 19 delta. The rule tells you. What else? Alteration of course results in an increase of CPA, whereas reduction of speed results in increase of TCP. We want CPA to increase instantly. Alteration of course means that there is no loss of maneuverability. Whereas reduction of speed, you lose maneuverability.
In alteration of course, there is no loss of maneuverability. Also, sir, time taken for the reduction of speed is more as compared to altering the course. And so time taken is also less in alteration of course, more in reduction of speed. So because of all these reasons, we would prefer alteration of course over reduction of speed because of these 7, 8 reasons. So that is why. ठीक है? Is this okay with everybody? पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा है? Point number 7, there is no loss of maneuverability in alteration of course. You don't lose maneuverability. But in reduction of speed, you lose maneuverability. Point number 4 क्या लिखा है सर? ROR says so. As per rule number 8 Rule number 8 and rule number 19. Okay, sir. So because of all these reasons, we would prefer to alter course than to reduce speed. So number 6 का लिखा है? Reduction of speed primarily leads to an increase of TCPA. Alteration of course primarily leads to an increase of CPA. Okay. All right. Let's stop here. Please revise whatever we have done. All right. Tomorrow we'll continue with more questions. Okay. See you then. Bye. Thank you, sir. Yep. Thank you, sir. Okay. Bye.